हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों आज मैं आपको हमारी वीडियो में बताने वाला हूँ जो स्पीकिंग का रिटेल लेक्चर है वो रिटेल इसको भी सीखना है। तो जो स्पीकिंग का हाँ, तो स्पीकिंग का जो रिटेल लेक्चर है दोस्तों, तो आज मैं आपको वो आपके साथ डिस्क्राइब करता हूँ और आपको अच्छे से बताता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं आपको कि कैसा होता है। तो जल्दी से आइए और इस वीडियो को देखिए। तो दोस्तों अब हम सबसे पहले खोलते हैं गूगल का पेज और इसमें हम सर्च करते हैं लैंग्वेज एकेडमी। आज हम गुरुली पीटी का मॉक टेस्ट नहीं खोलेंगे, आज हम खोलेंगे लैंग्वेज एकेडमी, क्योंकि लैंग्वेज एकेडमी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी बेटर है गुरुली से। बट गुरुली सस्ता था तो इसलिए मैंने गुरुली के मॉक टेस्ट लिए थे। बट आज हम आपको लैंग्वेज एकेडमी से रिटेल लेक्चर करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इस लॉगिन पेज को लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन पेज पे आने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा दोस्तों। अगर आपने यहाँ पे अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, बट हमारा अकाउंट है तो हम इसलिए यहाँ पे लॉगिन कर देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे लॉगिन करने के बाद हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक। हम फिर से हमने एलए में लॉगिन कर लिया है। एलए ही सबसे परफेक्ट है अगर आपको क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हम जाएंगे सीधे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। हमने कर लिया था रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस और डिस्क्राइब इमेज। अब हम जा रहे हैं डिटेल लेक्चर। डिटेल लेक्चर भी बहुत अच्छा एक सेक्शन है, इसमें आप बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हो। मैं पहला क्वेश्चन शुरू करती हूँ। अपनी नोटबुक रेडी रखनी है हमने। So maybe you're on vacation, you're in Athens for the first time. During the day, you're experiencing a bunch of new events and new sights and sounds. And as it's going by, that is, prospectively, it seems to be flying by. In retrospect, however, maybe the next day or you're back from vacation, looking back upon that, it seems to be a long day. So retrospectively, it seems that it was an extended period of time. And this is something that was pointed out as far back as William James in his Principles of Neuroscience over 100 years ago. And the point is that retrospectively, we're not so much telling time, but we're rebuilding or estimating how much time has elapsed based on the number of experiences we have in memory. So retrospectively, you're more estimating how much time has elapsed. If there was a period full of new memories, then you're left with the impression that it was a long period of time retrospectively. But prospectively, as it was taking place, you were paying attention to some sort of internal clock in our brain in which you were looking at or querying that was telling you that not much time has elapsed because you weren't paying much attention to time. So on the other hand, when you're very bored or in an anxious state, people experience time as dragging or going slow, again, prospectively. Time experience was the main topic of the lecture. He told about new events and sights and sounds. He told about flying by. He told about retrospective. He told about long day and extended period of times. He told about William James and science. He told about time. He told about rebuilding and estimating how much time is left. He told about new memories, long period of time. He told about not much time has passed. He told about board and people experience. He told about vacations and Athens. To conclude, he told about how people get bored. He also told about how time has lapsed. आपने देखा होगा मैंने बिल्कुल ही बकवास बोला था, बट देखते हैं कि ये कैसे मुझे नंबर देता है। ये देखिए, कैन यू इमेजिन दिस? मैंने कुछ भी उठा के कुछ भी बोला। बेसिकली आपको क्या करना है, आपको एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स को आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। उसमें डिवाइड करने के बाद ये जो जो आपको इसके कीवर्ड्स सुनाई दे रहे हैं वो कीवर्ड्स आपको लिखने हैं एक एक करके। मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगी और आपने थोड़ा सा नोटिस भी कर लिया होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, आपको कोई लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं। आपको बस साफ साफ क्या करना है, इस तरह का बॉक्स बना लेना है। इसमें आपको क्या करना है कि पहले उसका मेन टॉपिक लिख देना है। तो मेन टॉपिक लिखने के बाद आपको ही टोल्ड अबाउट ही करना है। ही टोल्ड अबाउट कीवर्ड दिस, कीवर्ड दिस, कीवर्ड दिस एंड कीवर्ड दिस। ही टोल्ड अबाउट कीवर्ड दिस एंड कीवर्ड दिस एंड कीवर्ड। ऐसे ऐसे करके आपको बोलना है, जैसे कि आप मेरे यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हो। बिल्कुल परफेक्ट स्कोर आया है। कंटेंट में 5 नंबर हैं, फ्लुएंसी में 5 हैं, प्रोनाउंसिएशन में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और अब मेरा रिमार्क्स भी पढ़ सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करके बताऊंगी। अब बेटर आप मेरे साथ साथ भी ये चीज़ कर सकते हैं।
हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आप वैसी ही ट्रिक जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा करके देखिए। $1.2 trillion of debts for diplomas make it abundantly obvious that higher education is a consumer product you can buy. All of us talk about education just as the economists do now, as an investment that you make to improve the human stock by training them for work, as an investment you make to sort and classify people so that employers can hire them more easily. The US News and World Report ranks colleges just as the Consumer Report rates washing machines. The language is full, peppered with barbarisms. Teachers are called service providers. Students are called consumers. Sociology and Shakespeare and soccer and science, all of these are content. Student debt is profitable, only not on you. Your debt fattens the profit of the student loan industry, the two 800-pound gorillas of which, Sallie Mae and Navient, posted last year a combined profit of $1.2 billion. And just like home mortgages, student loans can be bundled and packaged and sliced and diced and sold on Wall Street. And colleges and universities that invest in these securitized loans profit twice, once from your tuition and then again from the interest on debt. With all that money to be made, are we surprised that some in the higher education business have begun to engage in false advertising, in bait and switch, in exploiting the very ignorance that they pretend to educate? Now we'll start, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था. Higher education was the main topic of the lecture. He told about $1.2 trillion. He told about higher education and consumer products. He told about education and investment. He told about human stock and classify people. He told about hire them easily, ranks colleges. He told about language. He told about teachers are service provided. He told about students are the consumers. He told about profitable students, loan industry. He told about $1.2 billion profit. He told about home mortgage. He told about collateral, college and university and loans. He told about money. To conclude, he told about higher education business and tuition and interest on debt. To conclude, the lecture was very informative. इसको सबमिट करते हैं. इसमें मेरी फ्लुएंसी थोड़ी सी खराब हो गई थी क्योंकि मैं लास्ट में मैं थोड़ा सा गूफ अप हो गया था, बट कुछ बुरा नहीं है. देखिए अब कंटेंट में कुछ फर्क नहीं पड़ा. मैंने आपको वीडियो में भी करके दिखाया कि इसको कैसे करना है. तो इसका यही फॉर्मेट है. इसको हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे. आपको पहले मेन टॉपिक बोलना है कि डैश वाज द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर. फिर आपने जो कीवर्ड्स उठाए हैं, बस अगर वो कोई लेडी टीचर बोल रही तो शी बोलना है, और कोई मेल टीचर है तो ही टोल्ड अबाउट डैश, कीवर्ड डैश एंड कीवर्ड डैश. ही टोल्ड अबाउट कीवर्ड डैश एंड कीवर्ड डैश. और लास्ट में आपको टू कंक्लूड भी बोलना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरा जो स्कोर है वो है 14.9/15, तो इट्स नॉट अ बैड स्कोर. इसमें मैं आपको बार बार बोलूंगी कि आपको अपना मार्कर ठीक रखना है, क्योंकि आपको सेकंड चांस तो मिलेगा नहीं, और कीवर्ड फिर आप लिखना भूल जाओगे. तो मार्क जैसे ही आपका काम खत्म हो गया, मार्कर को बंद कर दीजिए. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Hair loss can be a sensitive topic for a lot of people. While certain life events and old age can lead to hair loss, sometimes it can be caused by a health condition. One such condition is alopecia areata. Alopecia areata is a condition that can cause your hair to fall out more than normal. The average person can pretty easily lose up to around 100 pieces of hair a day from their scalp, with most of that growing back. Alopecia areata is when that hair loss gets more significant and you have trouble getting that hair to grow back. The amount of hair that falls out varies from person to person, but it can be anything from small, rather unnoticeable patches to greater amounts of hair loss as the patches increase in size and connect with each other. We often think of this as hair loss relating to what's on top of your head, but this condition can also include hair loss in places like your eyebrows and eyelashes, as well as your face and other parts of your body. According to the National Alopecia Areata Foundation, this condition is fairly common, affecting as many as 6.8 million Americans with a lifetime risk of 2.1%.
While there's no cure, symptoms can come and go. It might develop slowly, then go away for a few years before coming back. Alopecia areata can lead to alopecia totalis, where you lose all of the hair on your scalp, or alopecia universalis, where you have total hair loss. Generally, when and if your hair ever does grow back, it might fall out again later on. It often first shows up with children, but can begin in any age group. हमने ये सारे कीवर्ड्स लिख लिए हैं, हम शुरू करेंगे. Hair loss was the main topic of the lecture. He told about old age and a health condition. He told about alopecia areata. He told about average person 100 pieces of hair. He told about hair loss more significant. He told about person to person and hair loss patches. He told about top of your head and eyebrows and eyelashes. He told about National Alopecia Areata Foundation. He told about 6.8 million Americans. He told about no cure. He told about alopecia areata totalis and alopecia areata universalis. He told about grow back and children. He told about slowly develop. To conclude, he told about areata universalis and grow back. उसको सबमिट करेंगे. ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट स्कोर है, ऑलमोस्ट 15 फुल स्कोर है. तो इसमें हमने देखा होगा कि मैंने किस तरह से बॉक्स बनाया और मैंने किस तरह से फिर इसको बोला, मेन टॉपिक बोल के उसके बाद सारे जो भी इसके कीवर्ड्स थे वो सारे बोले. अगर मैं इसे एज अ लैंग्वेज एज अ सेंटेंस पूरा बिल्कुल याद करके बोलूँ या इसको प्रॉपरली बोलूँ तो उसमें तो मेरे बिल्कुल 0 नंबर आ जाएंगे फ्लुएंसी में. जैसे कि मैं अपनी लैंग्वेज में बना के बोलना चाहूँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. आपको सिर्फ इसमें यही बोलना है कि डैश वाज द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर. ही टोल्ड अबाउट ए कीवर्ड एंड कीवर्ड डैश. ही टोल्ड अबाउट कीवर्ड डैश एंड कीवर्ड डैश. ही टोल्ड अबाउट कीवर्ड डैश एंड कीवर्ड डैश. उसके बाद आपको बोलना है टू कंक्लूड ही टोल्ड अबाउट कीवर्ड डैश एंड कीवर्ड डैश. इसमें आपको 30 सेकंड तक भी आप बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है. 30 to 35 सेकंड तक, पूरे 40 सेकंड तक जाने की कोई जल्दबाजी नहीं है और कोई मैंडेटरी नहीं है ऐसा करना. सो आई होप आपको ये वाला लेक्चर भी हमारा अच्छा लगा होगा. अगर आप और भी कंटेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं और ज़्यादा क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करें आपके साथ, तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए. मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों. एंड अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच दोस्तों. जय हिंद.